Hello everyone, welcome. Today let's solve PYQs of JEE Mains 2025. Also subscribe my channel Physics Numericals and learn to solve numericals step by step in an easy way. So let's start. First question is, a solid sphere of mass m and radius r is allowed to roll without slipping from the highest point of an inclined plane of length L and makes an angle of 30 degree with the horizontal. So, the information which is given in this question is that there is an inclined plane. Let's draw it. And there is a solid sphere. A solid sphere is given in this question whose mass is m and radius is r. Suppose at this place we have a solid sphere of mass m and it is at the highest point of an inclined plane whose length is L. So this length of the inclined plane is L. It is given in the question. The speed of the particle at the bottom of the plane is v1. If the angle of inclination is increased to 45 degree while keeping L constant, then the new speed of the sphere at the bottom of the plane is v2. The ratio v1 square is to v2 square is. So, at first the angle with the angle that is made, that the angle of the inclined plane with the horizontal is 30 degree. So first of all, theta 1 is 30 degree, and at that time the velocity of the sphere at the bottom of the plane is v1. This information is given in the question. When the angle of inclination is increased to 45 degree, suppose theta 2 is 45 degree, then the velocity of the solid sphere at the bottom of the inclined plane will become v2. We have to find the ratio of v1 square is to v2 square. This we have to find out. So first of all, we can see that at the highest point this solid sphere of mass m is at rest, so its velocity is 0. Initial velocity is 0. At the bottom, if the sphere reaches the bottom of the inclined plane, at that time, suppose when we are considering first case when theta 1 is 30 degree, at that time velocity of the solid sphere at the bottom of the plane is v1. Initially the velocity is 0, so we can use the equation of motion to find out the velocity v, final velocity v. We know v square minus u square is equal to 2as. Here v is v1, so v1 square. Initial velocity is 0. Acceleration is, suppose this solid sphere is having acceleration a, and the length s is, the distance is equal to L, which is given in the question. Similarly, second case, when theta 2 is equal to 45 degree, velocity is v2, initial velocity is 0, we can use the equation of motion and we can find out that the velocity v2 square is again equal to 2al. Now in both cases we see the velocity v is proportional to a. Here 2 is constant and length L is constant. L is not changing. It is written in the question that keeping L constant. So L is constant. Now we know that in case of an inclined plane, acceleration is given as g sin theta by
1 plus I by m r square. Now here I is moment of inertia, and we know that for solid sphere moment of inertia is equal to 2 by 5 m r square. Putting this value, we get A is equal to g sin theta by 1 plus 2 by 5. That is finally equal to 5 by 7 g sin theta. So this way we know that acceleration is proportional to sin theta, means 5 by 7 is constant, g is constant. So with the change in the angle theta, the acceleration will change. So we can say that velocity is proportional to acceleration, which is proportional to sin theta. This means v is, okay, one more thing, yahan this place it is v square. V square is proportional to A. So we can write V1 square by V2 square is proportional to sine 30 degree. When we have theta equal to 30 degree, then the velocity is V1, and when theta is equal to 45 degree, we have V2 at the bottom of the inclined plane. The velocity of the solid sphere at the bottom of the inclined plane is V2. So we can say, putting the values, it is equal to 1 by 2, sin 30 is 1 by 2, sin 45 is 1 by root 2. So finally this ratio is equal to 1 is to root 2. So we can say that the ratio of V1 square is to V2 square is equal to 1 is to root 2. That means the option A is correct. Now next question. Consider a circular disc of radius 20 cm with center located at the origin. A circular hole of radius 5 cm is cut from this disc in such a way that edge of the hole touches the edge of the disc. The distance of center of mass of remaining disc from the origin will be. So in this question we have a circular disc. A circular disc of radius 20 cm is given. Suppose the mass of this circular disc is m, and the center of the circular disc, it is given in the question, is located at the origin. So suppose this is origin and this is the center of C1 of this mass m of the circular disc of radius 20 cm. Now next part of this question mention that a circular hole of radius 5 cm is cut from this disc in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disc. So एक हम लोग बोल सकते हैं कि ये सर्कुलर होल एक कैविटी की तरह एक्ट करेगा, जिसको इस डिस्क से, ये जो सर्कुलर डिस्क है बड़ा डिस्क जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर था, उससे कट किया गया है, और इस तरह से कट किया गया है कि उस होल का जो एज है वो डिस्क के एज को टच कर रहा है. तो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, एंड सपोज दिस C2 इज द सेंटर ऑफ दिस स्मॉल सर्कुलर होल, जिसको हम लोग कैविटी भी बोल सकते हैं. सपोज द मास ऑफ दिस स्मॉल सर्कुलर होल इज m and the radius of this hole is 5 centimeter. It is given in the question. It is 5 centimeter. Now we know for disk or for 2D figures, mass is directly proportional to area. Here it is a circular disc, so mass is proportional to r square. We can use this relation and we can find out the mass of the, if mass of the bigger circle which is of radius 20 centimeter is m,
So in terms of this m, we can find out the mass of this small circular hole or cavity. Mass of circular hole of radius 20 centimeter m divided by mass of the circular hole, smaller circle, is equal to pi r1 square by pi r2 square. R1 represents 20 centimeter and R2 represents 5 centimeter. So from here we can write m multiply R2 square by R1 square is equal to m, which implies small m of the cavity is equal to m multiply R2 is 5 into 5 and R1 is 20 into 20, 5. So it will get cut and finally we will get m by 16. So we can say that the bigger circle has a mass m and the small cavity has a mass which is equal to m by 16. Now next we will find out the x coordinate of the center of mass, because in this question we have to find the distance of center of mass of remaining disk from the origin. जब इस कैविटी, इस सर्कुलर होल को इसमें से इस बड़े डिस्क से कट करके निकाल लिया गया, तब उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा और वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा. तो हम लोग को ये पता करना है कि जो रिमेनिंग डिस्क है, जब वो कैविटी को हटा दिया गया उसके बाद जो डिस्क बचा है उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ओरिजिन से कितने दूर पर होगा, ये हम लोग को पता करना है. तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का ऑफ द रिमेनिंग डिस्क. That will be equal because both mass here is mass capital M is for the circular hole, bigger circle of radius 20 centimeter, and small mass is represents the mass of the cavity. Because this smaller circular hole is being cut out, so it is a cavity, so we will take its mass as negative. So bigger circle का mass m multiply 0 because its center is already at the origin, so we will take it as 0, plus हम लोग जो कैविटी है उसके मास को निगेटिव लेंगे, so it will be minus m by 16. हम लोग ने अभी निकाला कि मास स्मॉल m जो है वो m by 16 के बराबर है, और क्योंकि ये कैविटी है तो हम लोग उसमें निगेटिव साइन देंगे. मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर फ्रॉम द ओरिजिन, एंड दिस डिस्टेंस we can easily calculate that because this bigger circle has radius 20 centimeter and this small circular hole has radius 5 centimeter, so the distance between C1 and C2 will be equal to 15 centimeter. So here we will write 15 divided the total mass. So mass of the bigger circle plus mass of the cavity. After solving we will get minus 15 m by 16 divided 15 m by 16, that is equal to minus 1. So the x coordinate of the center of mass will be minus 1. This negative signs represents that the center of mass will shift to the left side on the x axis, this place. So finally the distance of center of mass of remaining disk from the origin will be 1 centimeter. So this is the answer. Now next question. As shown below, bob A of a pendulum having massless string of length r is released from 60 degree to the vertical. It hits another bob B of half the mass that is at rest on a frictionless table in the center.
Assuming elastic collision, the magnitude of the velocity of bob A after the collision will be. We have to find the velocity of bob A after the collision. Collision होने के बाद बॉब ए का क्या वेलोसिटी है. एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पेंडुलम है जिसका बॉब ए है और ये एक मासलेस स्ट्रिंग से अटैच्ड है जिसका लेंथ आर है. ये लेंथ जो है इस स्ट्रिंग का वो आर है, ये गिवन है क्वेश्चन में. एंड दिस पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम 60 डिग्री टू द वर्टिकल. ये जो एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ वो 60 डिग्री का है और वहाँ से इसको रिलीज किया गया. अब इस ए का मास अगर हम लोग एम ले लेते हैं तो जो बॉब बी है, अनदर बॉब जो बी है, उसका मास हाफ द मास of the bob A, so it will be equal to m by 2. and when it is released, ये जो bob A है जब इसको 60 डिग्री एंगल पे रखा गया और उसको रिलीज़ किया गया तो वो बॉब B से टकराता है, इलास्टिक कोलिजन होता है और उसके बाद हम लोग को ये पता करना है कि बॉब A का वेलोसिटी कितना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will find out the height of at which this bob A is placed. Now ये लेंथ जो है स्ट्रिंग का वो r है, गिवन है क्वेश्चन में. एंगल जो ये वर्टिकल के साथ बना रहा है वो 60 डिग्री है. तो इससे ये पता चलता है कि ये दो दूरी है, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू r cos 60 डिग्री and cos 60 डिग्री is 1/2, so we can say it is r/2. Also this string is of length r, so total length is r from this place till here, so it means this length will be equal to r/2. From here we can see that the potential energy of bob A when it is at a height of r/2 is equal to mg r/2. When this bob A is released, then before having elastic collision with bob A, there will be some velocity of this bob A. We have to find that, and we can find out using energy conservation. जब बॉब ए जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो mg/2 के बराबर है, उसको रिलीज़ किया गया, तब वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में. और वो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं हाफ m UA² से. यहाँ UA जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बॉब ए बिफोर कोलिजन. कोलिजन होने के पहले जो वेलोसिटी बॉब ए के पास था उसकी मदद से हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी निकाला हाफ m UA². और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया? एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी इस ए के पास था जब वो इस r/2 हाइट पे था, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. तो हम लोग इसकी मदद से UA निकाल सकते हैं कि बिफोर कॉलिजन बॉब ए का कितना वेलोसिटी था. सो इक्वेटिंग these two mg/2 with half m UA² इक्वेटिंग these two m कट जाएगा, 2 कट गया. सो UA इज इक्वल टू √r/g. तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया, एनर्जी कंजर्वेशन की मदद से हम लोग को ये पता चल गया कि बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉब ए क्या था. अब कोलिजन होने के बाद जब ये बॉब ए बॉब बी से टकराया तब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. क्वेश्चन में इट इज़ गिवन दैट वी हैव इलास्टिक कोलिजन. वी नो व्हेन देयर इज इलास्टिक कोलिजन then the coefficient of restitution E is equal to 1, and also coefficient of restitution is equal to velocity of separation by velocity of approach. We will use these two
facts and we will find an equation. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जब ए और बी टकराया, सपोज आफ्टर कोलिजन दो ए का वेलोसिटी वी ए हो जाता है और बी का वेलोसिटी वी बी हो जाता है, तब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा वो होगा वी बी माइनस वी ए के बराबर, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉब ए जो यू ए के बराबर है. क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है इसलिए ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1. So from here we get an equation that UA is equal to VB minus VA. We will name it as equation 2. Also we can apply momentum conservation. जब इलास्टिक जब कोलिजन हो रहा है बॉब ए और बॉब बी का, तब वहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन भी होगा. उसकी मदद से हम लोग दूसरा इक्वेशन निकाल लेंगे. मोमेंटम कंजर्वेशन, पहले इनिशियली बॉब बी रेस्ट पे था और बॉब ए का वेलोसिटी यू ए था. सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा एम यू ए प्लस 0 इज इक्वल टू एम वी ए. वी ए जो है वो बॉब ए का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है, प्लस एम बाई 2 वी बी. बॉब बी का मास एम बाई 2 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हम लोग बी का मान रहे हैं वी बी है. सो फाइनली यू ए इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई 2. इफ वी मल्टीप्लाई इट बाई 2 we will get 2UA is equal to 2VA plus VB. This is second equation. We will use these two equations, equation 2 and 3, to find out the value of VA. So subtracting 3 from 2, that is 2UA is equal to 2VA plus VB by UA is equal to V minus VA plus VB. These two will get cut. Finally UA is equal to 3VA. So from here we get value of VA is equal to 1 by 3 of UA. UA का वैल्यू हम लोग ने पहले ही निकाला एनर्जी कंजर्वेशन से, जो रूट अंडर RG के बराबर है. सो वी विल पुट दिस वैल्यू एंड फाइनली द वेलोसिटी ऑफ बॉब ए आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू 1 by 3 रूट अंडर RG. एंड दिस वी हैव टू फाइंड आउट. We have to find out the velocity of bob A after collision. So this will be equal to 1 by 3 root under RG. Now next question. A force F is equal to x square y I cap plus y square j cap acts on a particle in a plane x plus y is equal to 10. The work done by this force during a displacement from 0 to 4 is. We have to find out work done, and what is given in this question? Force. Now this force is a variable force, x square y I cap plus y square j cap. Also one more relation is given, that is the particle is in a plane which is of the equation x plus y is equal to 10. So ये इस इक्वेशन की मदद से हम लोग y का वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लेंगे, that is y is equal to 10 minus x. We can put it over here that F force x square 10 minus x I cap plus y square j cap. ऑल्सो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और x कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है, 0 से 4 बन रहा है और y कोऑर्डिनेट 0 से 2 हो रहा है. तो x और y दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं dr इज इक्वल टू dx I कैप प्लस dy j कैप. क्योंकि फोर्स वेरिएबल है
So work done will be equal to integration f dot dr. So it will be equal to x square 10 minus x I cap plus y square j cap dot dx I cap plus dy j cap. So we will find the dot product and it will be equal to x square 10 minus x dx plus integration y square dy. Also x coordinate changes from 0 to 4, 0 to x coordinate changes from 0 to 4 and y coordinate changes from 0 to 2. So we will put the limits for x 0 to 4, for y 0 to 2. Now we will solve this equation. It will be 10 x square dx 0 to 4 minus integration 0 to 4 x cube dx plus integration 0 to 2 y square dy. So this will be equal to 10 x cube by 3 limits 0 to 4 minus x4 by 4 limits 0 to 4 plus y cube by 3 limits 0 to 2. We will put the values of the limits and we will find the answer. So here it will become 256 by 4 plus 8 by 3. It will get cut. Finally, the answer, if you will solve it, you will get 152. This is the answer.